हेलो बच्चों, आज हम कुछ प्रॉब्लम्स ऑन स्पीड एंड टाइम के सम करने जा रहे हैं। ये सम 9th और 10th क्लास के लिए पूछे जाते हैं। तो पहला सम है, रमन ट्रेवल 320 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड 180 किलोमीटर बाय कार, टेकिंग 7 hours, but he travels 160 by train and 240 by car. He takes 1 hour less. Find the speed of car and that of car and train. To let speed of train x kilometer per hour and speed of car equal y kilometer. Distance traveled by a train equal 320. 320 kilometer. Now time will be distance upon speed. In the same way, distance traveled by car equal 180. Now time 180 by y. In the first condition, total time taken by train and car is 7 hours. Now total time 320 by x plus 180 by y is equal to 7। ये फर्स्ट इक्वेशन क्रिएट हो गई। अब सिमिलरली ही ट्रेवल 160 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड 240 किलोमीटर बाय कार। तो सेकंड इक्वेशन विल बी नाउ 160 upon x plus 240 upon y. Now time is 1 hour less. तो टाइम विल बी नाउ टेकन 6 hours। फर्स्ट कंडीशन में टाइम 7 hours है, अब 1 hour लेस, तो विल बी नाउ 6। अब हमारे पास ये दो इक्वेशंस मिल गई है, इनको सोल्व करना है। टेकिंग बोथ इक्वेशंस 320 by x plus 180 by y is equal to 7। 160 by x 240 by y is equal to 7। अब क्या करना है, लेट 1 by x is equal to a and 1 by y is equal to b। तो सिंपल अब हम बन गए हमारे पास 320a plus 180b is equal to 7। 160a plus 240b is equal to 6। अब ये दो हमारे पास लीनियर इक्वेशन
बन गई है। अब इनको इक्वल करने के लिए इसको हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और इसको 1 से मल्टीप्लाई। तो नाउ 320A प्लस 180B इक्वल 7। 320A प्लस 480B इज इक्वल टू 12। अब इनको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट, कैंसिल। -300B इज इक्वल टू -5, माइनस से माइनस कैंसिल। B will be now 5 upon 300, 1 by 60। अब B की वैल्यूज को पुट करना है ए और फर्स्ट और सेकंड में। तो पुट वैल्यू ऑफ B 1 by 60 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट हमारे पास है 320A प्लस 180B। बी की वैल्यू हमारे पास है 160 इज इक्वल टू 7। 16 3 ज़ा 180। 320A is equal to 7 minus 3 is equal to 4. A will be now 4 divided by 320, 180। अब देखो बच्चों, 1 B इज इक्वल टू क्या है, 1/y है, और A इज इक्वल टू क्या, 1/x है। तो नाउ 1/x इज इक्वल टू 80 और x विल बी 80 किलोमीटर। सिमिलरली 1/y इज इक्वल टू 60 और y विल बी 60 किलोमीटर। तो ये वाला सम ऐसे करना है। अब सेम नेक्स्ट सम देखते हैं। A train cover a certain distance at the uniform speed. If the train had been 6 kilometers faster, it would have taken 4 hours less than the scheduled time. And if the train had been slower by the 6 kilometer, it would have been taken 6 hours more than the scheduled time. And find the length of the journey means distance find out करना है। तो डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे तो स्पीड इंटू टाइम। तो अब स्पीड और टाइम को हमें क्या करना है, लेट करना है। लेट स्पीड of the train x kilometer and time y r. The distance will be now speed into time, x into y kilometer. According to question, if the train had been 6 hours faster, it would have taken 4 hours less than the scheduled time. According to question, new speed will be
ओरिजिनल स्पीड क्या है एक्स, न्यू अब बन जाएगी 6 आर फास्टर, एक्स प्लस 6, और टाइम न्यू टाइम विल बी नाउ वाई plus less 4r. The distance will be now speed into time. Distance एक्चुअल में हमारे पास क्या है x एंड y, मल्टीप्लिकेशन एक्स वाई माइनस 4x प्लस 6y माइनस 24, ये कैंसिल हो गया, इक्वल क्या बच गया 0। तो इक्वेशन बन गई 4x प्लस 6y माइनस 24, 24 इधर आ जाएगा तो आपका बन जाएगा -4x प्लस 6y, फर्स्ट इक्वेशन। अब सिमिलरली इन सेकंड कंडीशन द and if the train had slower by 6 kilometer, it would have taken 6 hour more than the scheduled time. So now according to second question, new speed x, स्पीड क्या होगी अब स्लोअर, हाउ मच 6 किलोमीटर, x माइनस 6, एंड टाइम न्यू टाइम 6 hour more, y plus 6, distance speed into time, डिस्टेंस एक्चुअल में क्या है हमारे पास एक्स एंड वाई मल्टीप्लिकेशन, अब इसको 6 से करेंगे 6x माइनस 6y माइनस 36, ये कैंसिल, सेकेंड इक्वेशन विल बी नाउ 36 प्लस 6x माइनस 6y, अब इसमें से हम 6 क्या कर सकते हैं कॉमन ले सकते हैं, तो x माइनस वाई इक्वल 30, 6 6 30, x माइनस वाई इक्वल टू 6, ये हमारी हम बन गई सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास 24 इक्वल -4x प्लस 6y। अब हम इन दोनों इक्वेशन से x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इन दिस इक्वेशन x विल बिकम नाउ 6 प्लस y। अब x की वैल्यू को पुट करना है इक्वेशन फर्स्ट में, पुट x is equal to 6 plus y in equation first one, 24 is equal to -4 multiply by this plus 6y minus 24 minus 4y प्लस 6y, ये 24 इधर जाके क्या होंगे प्लस हो जाएंगे, -4y प्लस 6y 48, और ये आपका आ गया 2y, और y इज इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाई 2, 24। अब y की वैल्यू को इक्वेशन
सेकंड में पुट कर देंगे इस 6 + y = x, और 6 + y क्या है हमारे पास 24, x विल बी नाउ 30। x क्या है हमारी स्पीड है, और स्पीड कितनी हो गई हमारे पास 30 किलोमीटर। टाइम y 24 आवर। नेक्स्ट सम है हमारे पास अब a man travel 600 kilometer partially by train and partially by car. If it cover 120 kilometer by train and rest by car, it takes him to 8 hours. But if he travels 200 kilometer by train and rest by car, it takes 20 minutes longer. Find the speed of car and of train. The let speed of train x kilometer and speed of car y kilometer. फर्स्ट इक्वेशन है he travels 120 किलोमीटर by train and rest of by car. टोटल डिस्टेंस हमारे पास है 600 किलोमीटर। डिस्टेंस कवर बाय ट्रेन 120 किलोमीटर। रेस्ट विल बी कवर्ड 600 minus 120 = 480. This is covered by car. अब टाइम क्या है टेक्स हिम 8 आवर। टाइम बाय ट्रेन टाइम की स्पीड है टाइम सॉरी ट्रेन की स्पीड है डिस्टेंस कवर है 120 किलोमीटर। स्पीड है x, तो 120/x एंड टाइम बाय कार 480/y and total time taken by both 8 hours. 120/x plus 480/y = 8 hours. ये फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन now he traveled 200 kilometer by train 200/x and rest 400 by car. Time is now 20 meter longer 8 hour and 20/60। टाइम मिनट्स को आर में कन्वर्ट करना है 1/3। अब इक्वेशन हमारे पास बन गई 200 प्लस बाई एक्स एंड 400/y = 25/3। ये सेकंड इक्वेशन। सिमिलरली टेक 1/x = a and 1/y = b।
Equation now will 120a plus 480b is equal to 8. 200a plus 400b is equal to 25/3. अब क्या करना है, इस ए वाले या बी को इक्वल करना है। तो इसको इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, ये 120 है और ये 200 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 बन जाएगा, इसको 5 से करेंगे तो ये भी 600 बन जाएगा। तो इसको करेंगे 5 से मल्टीप्लाई और इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई, तो 600a प्लस 0, 5 40, 5 for the 20 plus 4, 2400 is equal to 40। 3 से ये 600a प्लस 1200b इज इक्वल टू 25। अब इनको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस माइनस ये कैंसिल, 1200b इज इक्वल टू 15, b इज इक्वल टू 15/1200, 15 1 15 8 120, 180 बी की वैल्यू आ गई। अब बी की वैल्यू हमें इस इक्वेशन में या इसमें पुट करनी है। पुट बी 180 सॉरी 1/80 इक्वेशन फर्स्ट वन हमारे पास है 120a प्लस 480b, b इज इक्वल टू 180 एंड 8, 0 से 0 कैंसिल, 8 6 120a प्लस 6 is equal to 8। 120a is equal to 8 minus 6, 2, and a will be 2 by 120, 1/60। अब a है हमारे पास 1/x, 1/x is equal to 1/60, x will be 60 kilometer, 1/y is equal to b 180, तो y is equal to 80 किलोमीटर। अब सिमिलरली थर्ड सम, सॉरी फोर्थ सम, Ruby travels 300 kilometer to her home partially by train and partially by bus. She takes 4 hours if he travels 60 kilometer by train and partially by bus. If she takes 100 kilometer by train and rest of by bus, she takes 10 meter more। Similarly सम है ये भी। Find the speed of train and bus। Let speed of train x kilometer, speed of bus by y kilometer, टोटल डिस्टेंस है हमारे पास
300 kilometer. Ruby travels 300 kilometer to her home partially by train and by bus. He takes 4 hours if he travel 60 kilometer by train. The distance covered by train 60 kilometer, remaining by बस 300 टोटल है, रिमेनिंग 240 किलोमीटर. टाइम टेकन बाय ट्रेन 60 by x and time taken by bus 240 by y. Total time taken both 4 hours. So equation will be now 60 by x plus 240 by y. Total time is equal to 4 hours. Similarly, second equation में क्या है? She travels 100 kilometer by train. 100 by x plus rest of 200 by bus equal. Now time is 10 minutes more. 4 and 10 by 60. 1 by 6. 100x plus 200 by y is equal to 25 by 6. ये फर्स्ट है हमारे पास और ये सेकंड इक्वेशन. नाउ टेक 1 by x is equal to a and 1 by y is equal to b. 60a plus 240b is equal to 4. 100a plus 200b is equal to 25 by 6. अब सेम इसको हम 5 से करेंगे 300, इसको करेंगे 3 से 300, विल बी इक्वल हो जाएंगे ये. तो मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3. 300a plus 0012b is equal to 20. 300a plus 600b is equal to 25 by 2. 3 से मल्टीप्लाई करने पर ये बन जाएगा. अब क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना. ये कैंसिल. 600b इक्वल 20 माइनस 25 by 2. 2 LCM ये बनेगा आपका 40 माइनस 25. 600b is equal to 15 by 2. b will be 15 by 2 multiplied by 106. 1 by 600. 15 4 is 60. तो b is equal to 1 by 80. अब b को पुट करेंगे एनी इक्वेशन.
put b in equation first. 1/80 in equation फर्स्ट वन. फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है 60a plus 240b is equal to 4. 60a plus 240b, b is now 180 is equal to 4. ये 3. 60a is equal to 4 minus 3. 1. A is equal to 1/60. अब a will is now 1/x. 1/x is equal to 1/60. X is equal to 60 kilometer. Same 1/y is equal to 180 और y is equal to 80 किलोमीटर. तो ये स्पीड और टाइम वाले कुछ सम थे जो आपको आई होप समझ आ गए होंगे. आपको कैसे लगे कमेंट में लिखिए और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे सेंड करें.